हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखते हैं को सुनते कानों धरते दिनों के साथ मलाइका का सलाम और प्रणाम। और मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं जुनैद। मैं हूं इंतसाम। आज की जो वीडियो लेके आए हैं जी, हमारी एक फॉरेनर है, वो विजिट करने जा रही हैं इंडिया की मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन। भाई ट्रेन का टॉपिक हमारे व्यूवर्स को भी काफी पसंद है और हमें भी ट्रेन जर्नीज पर इंडिया वाली के सफर करना काफी अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है और भाई अच्छा लगता है, जैसे कह रहे हैं जैसे इसने सफर किया है। भाई क्यों ना करेंगे, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है हम करना चाहते हैं। हम भी भाई इंडियन, वो ऐसा वक्त भी कभी आएगा जब हम इंडिया जाएंगे, वंदे भारत, नमो भारत और बहुत सारी राजधानी एक्सप्रेस वगैरह में हम सफर करेंगे। बिल्कुल। अगर तो हमें किस्मत ने मौका दिया तो। लेकिन उससे पहले हमने भाई फॉरेनर वाली वो जो की थी, हमने सीरीज बना ली कि भाई डेली कोई ना कोई फॉरेनर वाली हम लाजमी करते थे। इससे वो भी कवर हो रही है और ट्रेन जर्नी भी कवर हो रही है। तो भाई देखते हैं आज गोल्डन चैरियट भाई, तो उस पे हम ट्रैवल करेंगे, जो है वो ट्रैवल करने जा रही है, देखने जा रही है वहाँ पे कैसा उनको माहौल मिलता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसे उन्हें वेलकम किया जाता है और क्या क्या सुविधाएं हैं भाई ट्रेन तो में, वो भी देखने को मिलेगा। देखने जाते हैं जी आज की वीडियो। Today I'm boarding for an expensive train journey in India, the South Indian $5,250 luxury train, the Golden Chariot. Very, very luxurious. In this video, I'm getting a first impression of what a journey on South India's most luxurious train feels like. Can you even imagine, like, just watching the sunset from your comfortable bed in your luxury hotel room on a train? Like, what? Going through the design, the hospitality, the food and drinks, and of course, the comfort of the rooms, we'll get a brief understanding of what a luxury train journey in South India looks like. Oh, is it worth the money and the excitement? Hashtag bucket list goal. Make sure to keep on watching until the end and judge for yourself. क्या बात है भाई, ओ गरम गरम तोड़िए। भाई साहब इग्नोर कर दिया करें आप ऐसी बात। Hi, my name is Ivana and I've been living in Bengaluru now for almost 5 years. Today we have a very, very exclusive privilege to get the first impressions of the most luxurious South Indian train, the Golden Chariot. This train hasn't been operational for a few years and today we are going to check everything out. So this is a seating area or the bar area where you come in. There are restaurants, there are rooms, there's so much to see. And in this video, we're checking it all. So without further ado, let's just get into it. After taking a first look at this bar coach, I have to say it feels very, very luxurious and very exclusive. The train only has 11 coaches, which all have 4 rooms. So in total, 44 rooms. Very important to note that throughout the whole journey, the drinks and foods are included. Actually, even the tours on the stops where you go out and explore the city. So cheers to that. You don't have to worry about bringing any cash or credit cards or those kind of things. You just go up to the bar, you order a drink, and you go into the wonderful bar and enjoy the ride. Cheers. Lemon. Welcome to the first class restaurant where breakfast is served. I love the fact that they have these plush couches and plush chairs here because, you know, when you're enjoying your food, you should also be very, very comfortable. Can you imagine just waking up when it's still a little bit dark outside, the sun is rising, you're having your breakfast on a moving train and just enjoying the journey while also having amazing food. I love the fact that the cups actually also have the Golden Chariot logo, which I think is महल में बिल्कुल भाई, रॉयल पैलेस में आ गई हूं, ऐसी रॉयल लुक, रॉयल उनका phenomenal. I think that चैरियट अंदर से भी भाई पूरा गोल्ड और रॉयल लुक ही दे रहा है। इधर भी देखो, उनके बाहर something that really उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स देख लो, उनके रूम्स देख लो, उनका अंदर का कॉरिडोर, हर चीज ही भाई really sets luxury apart from anything else. It's those small details in aesthetics or in service or in the quality of food that really take your ordinary, amazing train experience to magnificent next level train experiences. This is such a hashtag bucket list goal.
We're currently sitting in Nalapaka restaurant. Over here, lunch and dinner is served, and I think the aesthetics again are so beautiful with the beige and the icy blue, and also the dark aqua green of the curtains actually with the Humpy chariot. Also, I would like you to pay attention to the beautiful wooden carvings which give the restaurant an extra decadent feel. I think it's also important to mention that each Golden Chariot coach has a name after a South Indian dynasty family, which I think is fantastic because it's such a fun and easy way to learn about the local history and actually almost immediately get immersed into it while you're on your journey. Oh, I love it so much. This is pure decadence, my friends. Can you imagine traveling through the whole of South India in a train that is as comfortable as this? It's basically a moving luxury hotel, something that I really, really love about India, and the hospitality is also really nice. The staff is so friendly, the drinks are good, and I feel that we should definitely check out more coaches. Yap style videos are hitting millions of views on platforms like Instagram and TikTok. But what if you जिम भी है, ऑफिस भी है भाई। आप ट्रेन में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। क्या बात है। बेडरूम भी भाई प्रॉपर। Welcome to one of the 44 rooms in total on the Golden Chariot luxury South Indian train. This is one with double beds, but obviously you also have one with a king bed, and you actually also have one with bunk beds, so families with children can also travel in one room. You basically have all of the luxuries in this room. There is quite a comfortable mattress, I have to say. It is definitely more medium firm, and then there is like very, very comfortable bedding. I love white fluffy sheets, and the comforter actually also feels very, very fluffy. Then the washroom is equipped with everything that you need. There is a laundry service, there is a safe here, and for the ladies there is actually also a full-on vanity space with an ottoman here, so you can easily do your makeup in the morning and be completely ready for all those Instagram pictures that you're going to take on the beautiful train. Can you imagine how comfortable this would be? Some of the most comfortable sleeps I've had in my life were one on a cruise and two on a train. I don't know what it is about a boat or a train that really like just comforts me to sleep. But yeah, I've had some of my best sleeps in my life in a train. So I can't even imagine how comfortable it would be in a luxury room like this. Well, actually, maybe you can even see the sunset from your room. Can you even imagine like just watching the sunset from your comfortable bed in your luxury hotel room on a train? Like what? Oh my gosh, that is like such hashtag bucket list goals. There is a full-size mirror here as well, so you can also do a fit check. It is fantastic. I love the small details in the room as well. Oh, I think this actually has the bunk bed. Huh. I love how the space is so efficiently organized. I think that is actually a bunk bed. 3 people can stay in this room. And then you have these like cute artworks. Fantastic, man. Fantastic. Very nice. अब वो इस दरवाजे के पीछे क्या है ऐसा? ये मेरे ख्याल को कोचेस के बीच वाला रास्ता है भाई।
Well, I don't think by now it should be a secret that my number one bucket list item for 2023 is definitely a journey on the Golden Chariot, South India's first luxury train, whether that is on the 3 days, 2 nights package or 7 days, 6 nights package. I mean, a girl can dream. Let's just put it out there, and hopefully we will go on that journey in 2023 or once in a lifetime. I don't care. जो है बिस्तर के ऊपर आप उसमें सी को बना दो क्या ये वन तक के साइड यार I am just absolutely smitten by this train. What are your first impressions based on this video? Have you ever heard of the Golden Chariot luxury South Indian train before? Or is this the first time you're hearing about it? Have you ever made a journey on a luxury train? Let me know down in the comments below. And of course, guys, make sure to share this video with as many people as possible, because I only learned about the Golden Chariot last year and I instantly put it on my bucket list. So I feel we need to share this information a lot more, and you can definitely impress your friends, family, and all the other loved ones by being first one to introduce them to the Golden Chariot. I'm having my evening chai here and manifesting. I'm manifesting this journey, guys. We need to make this happen in 2023. If you enjoyed this video, make sure to... Okay, भाई लाजवाब वीडियो थी और भाई लाजवाब वीडियो नहीं थी, लाजवाब ट्रेन थी। और मैं कहता हूँ सिर्फ यही गोल्डन चैरियट ही लाजवाब नहीं है भाई, रॉयल पैलेस भी है, इंडिया महाराजा एक्सप्रेस भी है। इंडिया की जो है काफी सारी ट्रेन जो है लग्जूरियस हैं और उनमें भाई कुछ में तो जो कोचेज है ना वो हर स्टेट के को रिप्रेजेंट करती हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। हर कोच के ऊपर उन्होंने डिफरेंट वो आर्ट बनाया हुआ है, इंटीरियर उसका इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि जो भाई पूरे महाराजा से भी रिलेटेड भाई उनको रॉयल शेप दी हुई है और प्रॉपर भाई फीलिंग ऐसी आती है जैसे आप जो है ना वो रॉयल वाली लाइफ किसी पैलेस में आप कुछ कहीं पे राजा महाराजा आप ओन करते हैं भाई, जैसे आप कहते हैं कि भाई आपको शाही सवारी भाई तैयार कर दी जाए, जैसे शाही तरीके से वो आपको वेलकम करते हैं भाई और ट्रीट करते हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यार, मुझे को फील ऐसी आ रहा होता है कि जैसे मैं किसी पैलेस में, और जैसे वो बता रही थी कि कोई पैसे वैसों का टेंशन नहीं है, आपको पहले ही टिकट में वो सब इंक्लूड हो जाता है। आप जाए बस जाके ऑर्डर करें, खाना आपको मिलेगा, जो चीज आप ऑर्डर करेंगे वो आपने जो भी पे कर देना है पहले उसके अंदर इंक्लूड होगा। वैसे इसकी फीस भाई मेरे ख्याल में उन्होंने बताई थी कि $5,000 है, $5,100 के करीब, $5,100 पर पर्सन के करीब है। तो भाई एंजॉय तो करना चाहिए जिंदगी किस चीज के लिए, लेकिन इसका रूट नहीं बताया ना उन्होंने कि कौन से सिटी से चलती है, कहां से जाती है। फॉरेनर्स के लिए मैं चलती है ज्यादा ना ये, फॉरेनर्स फॉरेनर्स ही करते हैं क्योंकि उनको वो स्टॉप्स होते हैं, उन्हें विजिट करवाया जाता है जंगल में, साथ साथ वो टूरिज्म भी चल रहा होता है। और कुछ जो है वो शाही महल जो है वो उधर भी लेके जाते हैं और वहाँ पे मतलब के स्टे भी होता है और वहाँ पे प्रॉपर उनके लिए एनवायरनमेंट सेट किया जाता है। ओके तो भाई अगर किसी को इसके रूट के बारे में प्रॉपर पता है तो वो भी बताइएगा, और आप लोगों में से किन किन ने भाई इस पे ट्रैवल किया, एक्सपीरियंस किया, वो भी हमें बताइएगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छे से कमेंट किया करें, कमेंट करने से कनेक्टिविटी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, तो अच्छे से कमेंट किया करें, अच्छे से टॉपिक को सजेस्ट किया करें, हम आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो अपना अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।